get started with where I come from. I come from Lucknow, and yeah, I don't belong to Lucknow, that is wrong English. You don't belong to a city, you belong to your parents. So, yeah, I come from Lucknow. I've been in Delhi for almost 10 years now, and I happen to be a chartered accountant, and I'm not one. I do have a degree, but I have another chartered accountant doing my finance for me. So it's because I don't have time for that, honest. So now, starting with the topic that I have to talk about with you today, and my husband and me both have brainstormed to come up with a few points that I do want to pass on to you before I leave the stage. The thing is that when I was very little, I was a very observant child. I would observe a lot. My mom would always come and cry to me. So she's the sweetest woman, she's still a baby. Like, I don't know if you can relate with this thought. आपकी मम्मा आपको कभी कभी लगता है अभी तक बड़ी ही हुई है, बच्ची है अभी तक. She's actually that. She's that person who cannot lie. And she is, like, today I call her my daughter. She's no more my mom, she's my daughter. That's how much I love her. Bachpan se hi I started to observe that there are too many things that are wrong in the society. And I'm not one of those people who would just sit and see the show and go. No, I had to do something about it. And honest, I've still not gotten a chance to do that. इतना शौक नहीं था मुझे पढ़ने का. मैं पढ़ती इसलिए थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को अपनी लाइफ चेंज करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है. सिर्फ एक यही तरीका है. क्योंकि I come from a very average middle class family. I was always fed, my stomach was always full, but there were otherwise too many troubles. And I wanted to do something about it. I wanted a life, not just for myself. I wanted it for my parents. I still live for them. I'm married. I got married 3 years ago. And believe me, I haven't left my parents. इंडिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है. लड़कियों से एक्सपेक्ट करते हैं कि शादी के बाद वो अपने माँ बाप को भूल जाए. ना मैं भूली हूँ, ना मैं भूलूंगी, और किसी में दम है तो मुझे कह के दिखा दो ये बात. आज मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ, मैं क्यों भूल जाऊँ? I will be equally good to my other family also. But do not keep wrong expectations of me. Because I will not adhere to your expectations. I live my life on my own, by my own choices and the decisions that I make. I choose what I get to do. You guys, if you actually think about it, you're living a very templatic life. What do I mean by templatic life? You're sticking to templates. कैनवा यूज किया है, इसमें टेम्पलेट्स होते हैं, थंबनेल के, ठीक है, वीडियोस के, हर चीज़ के थंबनेल्स होते हैं. हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हम जब से बड़े हुए हैं हमको हमेशा बताया गया है कि अब ये करना है नेक्स्ट. अब इतने साल के हो गए हो तो अब ये करना है, अब ये हो गया है तो अब ये करना है. What I want you to do and to realize is that this is a conveyor belt. कन्वेयर बेल्ट एयरपोर्ट पे देखेंगे आपने, जिसमें बैग्स जा रहे होते हैं. You're nothing else. If you're living a life like this, where you're just listening to others and doing and meeting their expectations, you're just another bag on that conveyor belt. I want you to take the responsibility in your hands. Do something about it. सर ने मेरा डायलॉग यूज कर दिया, मैं बोलने वाली थी क्रिएटिंग अ डेंट वाली बात. It is actually true. Stop listening to what others expect of you. I cleared my CA. I decided to do CA when I was only 17 years of age. When you choose a career that early in your life, it's like making a commitment. Like in my case, it would be like making a commitment with a man when I'm only 17, getting married to my, because when you choose a career, you're almost married to that career. And 17 is not the age
in which you get to decide, or you can be sure of what you want to do in life. I realized that. I did see it, and I realized कि जो जॉब मैं कर रही हूँ इसके लिए मैं बनी नहीं हूँ. मुझे प्रोफेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है. It's a very respectable profession, and all brilliant minds come out of that, like clearing those exams. CA के एग्जाम्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं. क्लियर मेरे से वो गलती हो गई, मतलब गलती नहीं, CA गलती नहीं था. उस टाइम पे वो सही था मेरे लिए, बट लाइफ चेंज होती है. यू चेंज एज अ पर्सन. I changed as a person. I realized when I was 23, I realized that this is not what I want to do. And now I'm already a CA. I started with a job. I did it for 3.5 years. I was pretty bad at it, only because my heart was not into it. And then what happened next was, I started to explore new things. I started teaching. Because, मतलब खाली तो नहीं बैठ सकते, अभी समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू नेक्स्ट, कौन सी जॉब करें, कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करें, कुछ नहीं पता. तो मैंने साथ में नौकरी करना स्टार्ट करी, छोटी सी एक टीचर वाली, जहाँ पे मैं सिर्फ 1 से 2 घंटा काम करती थी, और बाकी टाइम आई वुड जस्ट ब्रेनस्टॉर्म ऑन डिफरेंट आइडियाज एज टू व्हाट टू डू नेक्स्ट. माय नाउ हस्बैंड, हु यूज्ड टू बी अ फ्रेंड देन, he told me that Aleena, you're really good at talking. You should make some videos and upload it to YouTube. Why not? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ट्राई करने में क्या जा रहा है. I shot my first video and I uploaded it, and that's how it all started. And it actually changed my life, and I'm so glad I did that. Because अगर नहीं किया होता तो पता नहीं क्या कर रही होती अभी. I don't know, seriously. I really don't know. If you ask me, मैम क्या कर रहे होते आप? I have no idea. क्योंकि जॉब में नहीं कर रही होती. जॉब के अगेंस्ट नहीं हूं मैं. बिलीव मी, आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु डू जॉब्स एंड हु आर इनटू इट एंड हु एंजॉय देयर जॉब्स. इट्स जस्ट अबाउट फाइंडिंग व्हाट यू वांट टू डू. अनऑर्थोडॉक्स पाथ सिर्फ इसलिए अडॉप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फैंसी है, वो हॉट है, वो नाइस है, अट्रैक्टिव है. नो, इफ यू लाइक डूइंग थिंग्स ऑर्थोडॉक्स वे, गो अहेड, do it. You just have to find that one thing that you're very good at. मेरे पापा की एक बात थी जो मुझे आज भी याद है और हमेशा याद रहती है. वो हमेशा ही कहते थे कि कुछ भी करो, चाहे तुम झाड़ू लगाओ, तुम कुछ भी करो, ऐसा करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए. एंड एक पता नहीं यार, इट जस्ट उसने तो अंदर से ऐसे शेक कर दिया. आज तक every single thing that I do, I always have this thing back in my mind that I have to do it in a way that nobody can do it better than me. No matter what it is, no matter it is talking on the phone, thank you, no matter it's just passing a smile to somebody who's sad, making somebody's day, talking on the stage, talking to a friend on the phone, whatever I do, I put in everything that I have in it. And I'm so happy about being this way. Whatever I do, I make a video. मतलब कभी कभी टीम परेशान हो जाती होगी, I'm sure, but I'm very finicky about the way every single step is done. That is how crazy it is. उसकी वजह से initially when I was building Instagram, what I decided was that last year हमने start किया था Instagram build करना. I never took Instagram very seriously because मतलब थोड़ा सा ऐसे लगता था कि YouTube is more serious content and YouTube is a more serious platform, so I'd rather stick to that. Deciding what you're gonna do is such a lonely path. It's a very lonely path. आप अभी भी आपके मन में ना ये चलता होगा यार, क्या करूँ मैं नेक्स्ट, कॉलेज से निकल के क्या करूँ, वो ये कर रहा है, वो कर रही है, बॉयफ्रेंड ये कर रहा है, गर्लफ्रेंड यहाँ पे जा रही है, मैं क्या करूँ. This is such a lonely path, this is such a lonely journey, and there are no surprises. You have to take it all alone by yourself, and it's beautiful, it's amazing. To everybody I would just say, don't do unorthodox only for the sake of doing unorthodox. If you like mundane things,
There's beauty in it. For people who have different ideas, for people who are obsessed about doing something different in life are not always lucky. Sometimes they pay very, very heavy prices for those dreams. And I can tell you because it happened with me. I didn't choose it. मुझे ऐसा लगता है वो लोग, वो दिमाग की जो वो होती है ना, वो ऊपर से आती है शायद, पता नहीं कहाँ से आती है, ये नहीं मालूम, बट वो आपको सुकून से बैठने नहीं देती है. और इसलिए हमारे जैसे लोग जिनको कुछ डिफरेंट करने का मन होता है वो हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा ढूंढते रहते हैं, वो खोज नहीं खत्म होती. It's such a disturbing thought, but again, there is never something truly positive or truly negative. It's always a mix of the two things together. And same goes here. I really enjoy my work. I don't know how many people can say that, keeping a hand on their heart that you enjoy your work. I love my work. I'm slow. I know people have a problem being slow these days. Everybody wants to be so fast. सब कुछ अभी चाहिए. So patience तो रखना पड़ेगा. बाकी ये है कि अगर जर्नी को एंजॉय करना आप सीख गए तो उतना मुश्किल नहीं होता है. I'm telling you from my own experience. I have been into my business for the last 6 years now, and I don't do things very traditionally. Like businesses make tradition hota hai. You make a company and then you start chasing numbers and then you start expanding. Itna country, itna number, itna profit, itne naye employees. ये सारी चीजें बहुत कॉमन है businesses में. Everybody has that mindset. Believe me, I don't. I don't have that mindset. I'm slow. But the biggest part about all of this is, see, I don't want you to be inspired by me. मत लो inspiration. तुम्हारी मर्जी है. मेरे को मेरा सुकून चाहिए. अगर मैंने वो बना लिया है जिसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं और पागल हैं, पाना चाहते हैं उस चीज़ को, अगर वो मैं पा चुकी हूँ तो अब मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए. And I'm very serious about my peace of mind. If I work with a brand and I choose my brands, I don't work with everyone. If I work with a brand and they push me into doing things that I don't want to do, or they push me into saying things I don't want to say, because I have to be honest to my people, it's very important to me. My ethics are very, very important to me. And if they want to say, if they want me to say, ये best है, यही लो, I tell them right on their face, मैं नहीं बोलूँगी. क्योंकि मेरे को क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा वो बोलने से? शायद कुछ पैसे. और जो मैंने अपने मॉरल्स पे, अपने एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज किया कि मुझे पता है ये बेस्ट नहीं है, जब तक मुझे पता यकीन नहीं होगा कि ये बेस्ट है, मैं नहीं बोलूँगी बेस्ट है. And believe me, we fought on these words with brands. एक शब्द पे लड़ाई होती है. अगर आप लोगों को बताऊं मैं तो, मैम ये वाला हटके क्या ये वाला आ सकता है उसकी जगह? And I know नहीं आ सकता, क्योंकि ये सच है, आप जो बोल रहे हो झूठ है. If you love your work, you should be honest in it. If you cannot be honest in what you're doing, rather do something else. Life though, it's fleeting. All of us are dying. Every one of us is dying. These are just fleeting moments. किस लिए इतनी भाग दौड़ है, इतना पागल हो रखे हैं. 25 साल के मैंने इंटरव्यूज दिए हैं. A very recent interview. That boy was 25 and such a sweet boy. Such a sweet boy. I loved having those few moments of conversation with him. He's so overworked. So overworked. When I was 25, I was enjoying my life. I was having fun. I was figuring things out. Obviously, I was very confused. Human emotions हैं, of course. आज भी confused होती हूँ बहुत चीज़ों को लेके. None of this is gonna change. If you make, so right now, I can tell you, by God's grace, I call myself successful. I don't know if others do. I call myself successful.
And I'm fine in my pace. I just want to tell you that जो feelings आप लोग feel करते हो ना, from where you are watching me, और जो feelings मैं feel करती हूँ standing here as a person, ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है बस। आप जो एंजाइटी फील करते हो मैं भी करती हूँ, आप महीने में 2-3 बार शायद रोते होगे, मैं भी रोती हूँ, आपके हार्मोन इम्बैलेंसेस होते होंगे, मेरे भी होते हैं, आपको गुस्सा आता होगा, उससे ज़्यादा ही शायद मुझे आता होगा, आपको सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना पड़ता होगा, मुझे भी करना पड़ता है। ह्यूमन लेवल पे हम ज़्यादा अलग नहीं हैं एक दूसरे से। ऑफ कोर्स मतलब आई एम डूइंग फाइन इन माई लाइफ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल। 8-10 साल का स्ट्रगल रहा है इन द लास्ट डेकेड, एंड बहुत अच्छी जर्नी रही है। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट, बिकॉज I got to experience amazing things. I traveled so much. I traveled a lot, by the way. I don't know if you follow me or not, but I travel a lot. I travel like crazy. Like every single year I travel at least 5-6 countries. And this is not work travel. This is just Aleena living her life. Because Aleena deserves it. I travel with my husband, and every place that we go, we make sure that we spend at least 10 days over there. And when I'm there, I don't work. My team is amazing. So there is a 21-year-old boy. He is so sweet. He's like, ma'am, bilkul tension mat lena, main hu. And that's how we manage work. किसी को फील नहीं होता है, मतलब जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको नहीं फील होगा कि अलीना छुट्टी मना रही है, क्योंकि काम वीडियोज आते रहेंगे टाइम पे, वही मेरा काम है। आई मेक वीडियोज, दिस इज व्हाट आई डू। बाकी ये है कि देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स दैट आर इन द पाइपलाइन, एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दोज थिंग्स। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट जो लोग स्लो होते हैं उनकी भी लाइफ में तरक्की होती है। आई एम अ वेरी स्लो पर्सन, सो इफ यू आर स्लो, इट्स ओके, जस्ट टेक अ ब्रेथ, इट्स ऑलराइट। ओके, बाय।